Om Shanti. Sister said actually that you are fortunate, but I feel I am fortunate. I am fortunate that I came to meditation center 20 years, 22 years back. And I'm fortunate that I'm a part of this big family. And I'm fortunate that I came here also. Actually, I came to write one exam, one practical exam here in Hyderabad. So it started like 22 years back. I was studying my MBBS second year. So I used to do a lot of bhakti. So even since childhood with my mother. So my habit was like going to temple every Thursday. So in MBBS second year I couldn't get time because of some hectic schedule. So there was a gap of nearly 2 months that I did not go to temple. So after 2 months, I went to the temple again, and I felt like now अभी भगवान क्या सोचेंगे शायद उनको मुझे मेरे ऊपर गुस्सा आ जाएगा. He will become angry upon me because I have not come for 2 months. So with that doubt I was going, and it is a time of Harti actually. Aarti देते हैं 6 o'clock in so just I was going, it was late by 5 minutes or 3 minutes, they closed the door. So it was pakka for me, I became like, oh God got angry upon me. So maybe मैंने भी ठान लिया that so जब तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा then till then I will not leave this place, I will sit on the stairs outside. Otherwise this is my habit like मुझे whatever the काम मुझे होता है आई विल गो टू दैट वर्क आई विल सी दैट वर्क एंड आई विल कम बैक. यहाँ यहाँ देखना तो मेरी आदत नहीं थी. So on that day actually the doors were closed, so I sat on the stage. Then I saw pradarshini going on. 7 days का जो pictures होते हैं exhibition होता है. So they were explaining those pictures. So मेरा time half an hour यहाँ पे मुझे बैठना है क्योंकि मुझे भगवान को मनाना है. So then I thought I will see these pictures. So when somebody was explaining to me the picture of 8 powers. If you practice meditation, you will get all these powers. So in that a power attracted me a lot, power to face. So किसी ने बोला कि आपको मेडिटेशन से इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप किसी भी परिस्थिति को फेस कर सकते हो. इट कैन बी अ वेरी बिग सिचुएशन बट यू कैन फेस दैट. तो मुझे डाउट आया, मुझे लगता था कि अगर बड़ा सिचुएशन है तो मैं फेस नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा डाउट रहता था. आफ्टर सीइंग दैट पिक्चर एंड व्हेन समबडी वाज एक्सप्लेनिंग, तो देन आई हैव टू गो देयर. So with my mother I went there and then the journey continued. 7 days course हो गया है. Then somebody told that यहाँ पे morning godly versions होते हैं, you can come to the class. Because I was doing MBBS तो weekly once या weekly twice ऐसे जाती थी. Then after 1 or 2 months एक भाई बिग ब्रदर so भाई जी ने बोला कि sister you are coming since 2 months no, then what are you going to give to God? So then I thought, I am student, I am not earning money, I don't have money, I told him. So then he told, God को money नहीं चाहिए, he doesn't want money from you, but उनको आपकी weakness चाहिए. So whatever the weakness is there in you, you give it to him. Then मुझे आया मेरा बहुत बड़ा weakness है गुस्सा. मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा. माना घर वाले भी तंग हो जाते, इतना ज़्यादा गुस्सा. वेरी वेरी माइंड. आई यूज्ड टू बी परफेक्शनिस्ट. अगर मम्मी मुझे ये बाल बनाती थी, दोनों एक ही बराबर आना है, एक आगे एक पीछे, तो बहुत गुस्सा मम्मी के ऊपर. सो सबको डराती थी मैं इतना. देन आई थॉट सो मुझे गुस्सा छोड़ना है. तो एक पेपर पे मैंने लिख दिया कि आई हैव टू लीव एंगर फॉर द सेक ऑफ गॉड. मैंने एक पेपर पे लिख के मैंने वहाँ पे मेडिटेशन रूम में रखा. And I kept that in my pharmacology book also for 1 week only, not for more days because I know that I cannot do it. So I kept in the pharmacology book. मैं just जाती थी, मुरली सुनती थी और मेडिटेशन करती थी, बस उतना ही. उसके ऊपर कैसे काम करना है that also I don't have an idea. इतना डेप्थ नहीं था. It was just 2 months. I was like, so after nearly 1 week या 10 days क्या हुआ, I was searching for my specs. बिकॉज मुझे अभी पढ़ना है, पढ़ने का टाइम हो गया है.
मगर मुझे स्पेट्स नहीं दिखाई दे रहा। आई वाज सर्चिंग फॉर 10 मिनट्स, पूरा सभी से पूछ लिया घर में, किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। माय सिस्टर सडनली गॉट अप फ्रॉम द चेयर and it was there in the chair and she was sitting on my specs. So then I saw and I took my specs and I kept and I started studying. Oh, यहाँ पे है क्या, तो मुझे अभी पढ़ना है, तो मैंने specs लगाया, पढ़ना शुरू कर दिया। Then she came and looked at me. Akka, are you okay? Anything happened to you? She asked. No, what? Why you are seeing like that? तुम्हें गुस्सा नहीं आया? You did not get angry upon me. पहले होता तो मुझे इतना बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बात पर डांटती थी। So then 2-3 situations happened in that way that whenever they are doing mistakes, I'm not shouting at them. Then they asked me, "You are going there. What they are teaching you that you stopped getting angry?" And then they also came to center and they took 7 days course actually. So then my journey started like that. And this is a very beautiful journey of 22 years. I have seen many things how that spirituality helps you, and experienced in my career also. Like a student, I started in MBBS final year. बहुत छोटा थोड़ा टाइम है, बट इन शॉर्ट आई विल टेल। MBBS फाइनल ईयर में लाइक इट विल बी लाइक ऑलवेज आई फील, आप पढ़ाई जो पढ़ रहा है, whoever is studying, what is that? It is physical body या mind and intellect पढ़ रहा है? कौन पढ़ रहा है? बॉडी पढ़ रहा है या मन और बुद्धि पढ़ रहा है? मन और बुद्धि पढ़ रहा है। एनालाइज कौन कर रहा है? बुद्धि एनालाइज कर रही है। रिमेंबर कौन कर रहा है? बुद्धि। इट इज नॉट आइस। सो यहाँ पे जब हम आते हैं, जो भी काम रिलेशनशिप्स, कौन रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर रहा है? इज इट फिजिकल बॉडी या मेरी मन और बुद्धि या संस्कार? आपके बारे में मैं अच्छी सोचती हूँ, आपके बारे में मैं बहुत आपके लिए मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, यहाँ पे थॉट आता है ना, देन आई विल रेडिएट। यहाँ पे मुझे आता है ये बहुत अच्छे हैं, मुझे इनके लिए करना है। यू नीड नॉट गिव समथिंग टू मी, बट आई एम गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग। अगर मेरी सोच की तरीका ये है, देन आई विल गो ऑन रेडिएटिंग दैट थ्रू माई आईज। I will go on talking to you with my mouth in that same way, and my actions will be radiating that love and peace uh, with my hands and with my vibrations, all that comes to you. So हम क्या सोच रहे हैं दूसरों के बारे में, that will make relationships. So I have seen all these beautiful things in my life. So what I feel is, यहाँ पे जब हम आते हैं, यहाँ पे सिखाया जाता है आपकी मन बुद्धि को, संस्कारों को कैसे श्रेष्ठ बनाना है। हाउ यू कैन एलिवेट दैट, मीन्स रॉ मटेरियल को आप एलिवेट कर रहे हैं। अगर दूध श्रेष्ठ है, शुगर इज़ वेरी मच गुड, एंड राइस का क्वालिटी बहुत अच्छा है, आप जो भी बनाना चाहते हो, यू कैन मेक 10 आइटम्स विद दैट, एंड इफ़ यू नो हाउ टू मेक इट, इट विल बी ए गुड थिंग। सो अब यहाँ पे मन को, बुद्धि को, संस्कारों को, आप स्टूडेंट की तरह आओ, एक जैसे कि भाई जी ने बोला, एक वाइफ और हस्बैंड की तरह हो, एक जॉब कर रहे हैं जो इंजीनियर है या लॉयर है, कुछ भी है, ऐसा आओ, बट यू आर गोइंग टू मेक दिस वन बेटर एंड दैट इज गोइंग टू डू योर जॉब देयर। स्टूडेंट with the very best mind and intellect, he will be successful. A housewife with the best mind, intellect and sanskars, she will be the best housewife. A mother or a father with the best mind, intellect and sanskar, they will be the best mother, father. So a job, a lawyer or an engineer or a collector or a prime minister with the best mind, intellect and sanskar, they are going to be the best and they are going to do the best for the society. That I have learned. MBBS फाइनल ईयर में 2 एग्जाम्स हुए हैं, मेडिटेशन करके जाना, इट वाज द बेस्ट रिजल्ट। PG एंट्रेंस में बेस्ट रिजल्ट, एंड कुछ 2-3 आई विल शेयर विथ यू। So many things I have learned, but some things I would like to share with you. मेडिटेशन यहाँ पे क्या सिखाता है आपको? जस्ट अच्छी चीज़ें नहीं, बट हाउ टू रिमेन स्ट्रॉन्ग। Even others are not doing right, but you will get strength to do everything right. That is very important, very important. So gist of all these things, whatever we are learning here, just in summary is, we have to do right. संकल्प राइट करना है, दृष्टि राइट रखनी है, बोल राइट रखना है, कर्म जो भी हम करते हैं उसको राइट रखना है। राइट माना जो सुख देता है सबको।
जो रॉन्ग है उसको हमें नहीं करना है, because whatever we are going to give, whatever we are going to do, that is the result we are going to get. अगर मैं यहाँ से wrong करता रहूँ and I go on listening to many good things, it is not going to work. जब मैं राइट करती हूँ सब कुछ, तो मुझे राइट ही आता है. आई एम गिविंग पीस, आई एम थिंकिंग पीस, आई विल रिसीव पीस. तो एक बार MBBS थर्ड ईयर में ऑफ्टल एग्जाम, फाइनल एग्जाम, so कल कल सुबह का एग्जाम था, एंड बिफोर डे नाइट somebody came and told that paper is out. It was very difficult subject actually for me. After मैंने सब कुछ remember करना होता था. तो somebody told that these are the 10 questions that you are going to get in the exam. So सभी friends जो है वो सारे 10 questions को पढ़ना शुरू कर दिया. And somebody came and started giving me that Harika ये है questions. Do you want to listen? I said no. I don't want to listen to those questions because that is not right. अगर मैं फेल हो जाऊं तो भी कोई हर्जा नहीं है, बट मुझे रॉन्ग वे में जाना नहीं है. आई डोंट वांट टू कॉपी फ्रॉम समवन, आई डोंट वांट टू लिसन टू द पेपर, आई वांट टू राइट द एग्जाम ऑन माय ओन, चाहे रिजल्ट कोई भी हो. देन द नेक्स्ट डे व्हेन वी वेंट टू राइट द एग्जाम, it was the wrong information that the paper was leaked. There were not the questions at all. किसको लॉस हुआ है? जिन्होंने वही पढ़ा उनको लॉस था, जिन्होंने पूरा पढ़ा अच्छा हुआ था. सो मेनी थिंग्स लाइक व्हेन वी गो. एंड एक और एक्सपीरियंस है कोविड के समय में. दीदी टाइम हो गया. तो कोविड के समय में इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड फॉर डॉक्टर्स. आई वॉज वर्किंग इन अपोलो हॉस्पिटल इन विशाखापट्टनम, लाइक कंसल्टेंट फिजिशियन. सो पूरे कोविड का एडमिशन्स हमारे अंडर, फिजिशियंस के अंडर, एंड एवरी डॉक्टर वॉज वेरी मच overburdened really. Physically we were overburdened, mentally also we were overburdened. तो उसी समय में क्या हुआ, मेरे मेरे फादर एडमिट हुए थे. माय फादर गॉट एडमिटेड. ही वाज अ हार्ट पेशेंट. ही गॉट सिक एंड हार्ट भी, किडनी भी, लंग्स भी, तीनों ऐसे रिपीटेड हॉस्पिटलाइज होते थे. एंड वी डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट. वी थॉट दैट ही इज रिकवरिंग, but one night suddenly, it was unexpected, while doing one procedure he got cardiac arrest. But मेरे अंडर पेशेंट्स भी थे. Then I got a call and I was there only. I saw everything happening in front of my eyes. I couldn't. It was a very lovely relationship with my father and mother. Very lovely relationship. He used to call me like mother. हारिका नहीं बोलते थे, तल्ली या अम्मा बोलते थे मुझे. एंड डेली इन द हॉस्पिटल आवर रिलेशनशिप इज लाइक, हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए थे तो ओनली यू शुड ब्रिंग मी ब्रेकफास्ट, देन ओनली आई विल ईट. सो एवरी डे आई यूज्ड टू ब्रिंग breakfast from my home, and I used to keep him, and then only he used to eat. So then he got cardiac arrest. All the resuscitation was going on, and I was like stunned because it is very unexpected. Then मैं बाहर आ गई वहाँ से. अंदर से आवाज़ ही नहीं आ रहा था क्योंकि अभी मुझे बहन को बोलना है. माय मदर ऑल्सो गॉट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. शी ऑल्सो गॉट इन्फेक्टेड. दीदी बेंगलुरु में है, माय सिस्टर. सो बोलने के लिए आवाज़ ही नहीं आ रहा था. What should I do now? Then I opened our godly versions in the phone. Then I started reading them. So मेरी आदत है जब भी कोई भी डिफ़िकल्टी आती है, then I detach from that situation and I start remembering God. एंड आई रीड दोज गॉडली वर्शंस, बिकॉज जो भी आप पॉजिटिव पढ़ते हो ना उसके असर आपके मन में होता है, ताकत आ जाती है. देन आई रेड दैट गॉडली वर्शंस, आई रिमेंबर्ड गॉड, देन आई गॉट पावर. देन आई टोल्ड ऑल माई रिलेटिव्स, एवरीबडी केम, एंड देन आई टोल्ड गॉड लाइक इतने साल से मैं अभ्यास कर रही हूँ, इतना बड़ा सिचुएशन आया है, लेट मी चेक. जैसे कि भाई जी ने बोला यू हैव टू डू एक्सपेरिमेंट, लेट मी चेक हाउ कैन आई फेस दिस बिग सिचुएशन. That was a very big situation for me to face my father's death. I can never expect him, like, because as a doctor I always wanted to save him, but sometimes it will be not in your hand. So then I remembered I practiced all the meditation that I have learned since these many years.
So it helped me to calm myself because माँ को बोलना है she is sick, got admitted in the hospital, दीदी को बुलाना है. Unfortunately, my sister's husband also got infected. He also got admitted in the hospital. So तीनों को देखना है. It really helped me. I could stay calm. So but उससे थोड़ा बाहर आ गए. Everything got settled, but I couldn't get leave only 4 days because lot of patients were there. And the thing was on the day when my father got cardiac arrest, it was night and patient who is admitted under me, she got bad. I was in the hospital. She is very young, 26 years. I got a call from the ward that your patient got sick. Then I went there and I saw she is sick. Then shifted her to ICU. I know that my father is not going to make cardiac arrest. Resisted किया हुआ है, but I know that by tomorrow morning maybe he is not going to make up. But now I can't leave her. So then again I remembered God took energy from him and kept my energy on her. And after everything, the next day I handed over that case to some of my colleagues because now I can't because my father is like this. But after I came from leave, I saw that she got better, she went discharged, and then she came for review to me. I felt like, okay, because of my thing, I did not neglect somebody in a younger situation. So all this happened, and next situation was it was more difficult for me. After 1 month, the cases had increased very much. इतना ज़्यादा हो गया है. And it was very bad situation also. Like whenever some patient comes in a severe form, COVID, हम उनको बचा नहीं पाते थे आईसीयू में. अगर कोई वेंटिलेटर पे गया तो इसका मतलब दे आर नॉट गोइंग टू कम आउट. कितने भी मेडिसिन आए, माइल्ड है, मॉडरेट है, हम उनको बचा सकते हैं. जब वेंटिलेटर में गया तो आप कितना भी ट्रीटमेंट कर दो, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, देयर वाज नो ट्रीटमेंट एट ऑल. सो हॉस्पिटल वाज वेरी फुल एंड रोज हमारा काम यही रहता था सुबह को 8 बजे आना. आई वॉज लिविंग अलोन एट होम बिकॉज मदर को मैं रिस्क नहीं देना चाहती थी बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम हॉस्पिटल. आई कांट गिव हर कोविड अगेन. सो आई वॉज कुकिंग माई सेल्फ एंड सुबह को जाना, वो पूरा पीपी वेयर करना एंड रात को 8 बजे या 6 बजे आना, 7. And you were in the PPE throughout the day, seeing all the patients till then, and coming at 7 or 8 o'clock, then you got drained. And उसके मतलब कुछ भी दिमाग में नहीं चलता था. सेंटर को नहीं जा पाते थे क्योंकि लॉकडाउन था. So hospital and घर. So then daily seeing very sick patients, explaining to the attenders how bad your mother is, how bad your father is. I said bad, mana you will see every painful story in front of you. It was very traumatic. Means एक हस्बैंड आता है अपनी पत्नी को लेके, एक छोटा बच्चा को लेके. वो दिखाते हैं कि ये छोटा बच्चा है, पत्नी को आप सेव करो. एंड वी नो दैट शी इज नॉट गोइंग टू मेक आउट. When 20 years female girl आई, she brought her father, told that मेरी माँ चली गई एक और हॉस्पिटल में. I don't want to lose my father, that's why I brought him to you. But after seeing his CT scan, I know that he is not going to make out. कैसे मैं काउंसिल करूँ उसको that you are going to lose your father also. And it was so painful. And another son brought his father. He used to tell me daily, आप कुछ भी कर लो, I have lot of faith in you, I will bring money whatever it is required, but आप मेरे father को save कर लो. I know that he is not going to come out. So daily coming to the hospital in the morning and seeing that type of patients in the ICU, giving counseling to them that your father is not going to make out, your mother is not going to make out, your husband is not going to make out, your wife is not going to make out. I got drained out, literally. So I could come out of my father's situation, but this was like little overburdened. Then I went one day and I sat in my chamber one morning. And literally I sat and tears coming out of my eyes, sorry. रोने लगी. And then I thought, now मेरे से अब नहीं होगा. I can't do this daily.
आई कांट डू दिस जॉब. मैंने फ़ोन उठाया एंड आई वांटेड टू कॉल माय सुपरिटेंडेंट एंड आई वांटेड टू कॉल माय आईसीयू इंचार्ज. सर मैं अभी ये नहीं कर सकते, आई वांट टू गो ऑन लॉन्ग लीव. मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ. I thought of calling them and telling, but just I thought just I will take 5 minutes. I will remember God. I will read godly versions, and then I will quit this. So मैं परमात्मा को याद की और वो godly versions पढ़ने लगी. Then a thought came into my mind. You are seeing 10% of people who are very sick, but 90% of people who are in the ward and who are coming to OP, you are really able to save them if you can give the right treatment at right time. So if you go on leave, those 90% of people also they will be like deprived of the correct treatment, and your colleagues are already overburdened. Loss of one doctor means loss to hospital and loss to the society. तुम्हें कुछ भी करना है लेकिन you have to continue. You cannot give up. So all those thoughts came to my mind, and then I remembered God, sat in meditation. What are the things that I have to do? Checklist I kept. So then I felt, इतना काम करने वाली क्या है? This is not physical body. A doctor तो physical body नहीं है. This is mind and intellect which is working. I have to take care of my mind first. Before taking care of patients and my family, I have to take care of myself. Otherwise, I cannot do this. Then मैंने सिस्टर को कॉल कर दिया. सिस्टर कुछ भी कर लो, गिव मी सम परमिशन दैट आई वांट टू कम टू सेंटर डेली. लॉकडाउन है, किसी को भी अलाउड नहीं है, बट मेरे पास डॉक्टर का एक पास होता है. डॉक्टर्स आर अलाउड टू गो एनीवेयर एंड कम. सो वो पास रख के मैं सेंटर का आऊँगी. आई विल नॉट कम इन टू द सेंटर, आई विल गो टू द अपस्टेयर्स. I will sit there in the upstairs, but I want to do meditation for at least 15 minutes. Otherwise, I can't do this job. Then sister ने बोला, why to sit in the upstairs? They gave me really, they were very good actually. ऐसा एक क्लासरूम होता है, दो क्लासरूम्स होते हैं वहाँ पे. One classroom we will give to you completely. We will not go into that. We will use another classroom. Only sisters रहते थे. You can come at any time. You can stay here. We will give you food. Please don't cook for yourself. That is again extra burden. So daily I used to come to the center first, read the godly versions by myself. I used to take food given by sisters क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन बनता है. So I used to read, I used to meditate, I used to spend some time 15 minutes, and then I used to go to the hospital and do work. And इतने पेशेंट्स के ब्लेसिंग्स मिले हैं, इतना पेशेंट्स का ब्लेसिंग्स मिला है. वन पेशेंट केम सो बैडली, लाइक लंग्स में छेद पड़ गया है, न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं. We kept a tube. It was very difficult case actually. Everybody outside said that he will not survive. They came, and somehow it is his luck actually. He got many patients actually after that who got survived, and it was like 6 years now. Even now they message me on that day. They give me the message that on this day my brother got discharged from our hospital. You are an angel to us. Now he is doing job. He's I think he is some good position in that village. So his brother tells me like this is a big help to the village also. So many blessings. So my experience is that meditation helps you to overcome your weaknesses, to do what is right despite of the society. 100 people may be doing wrong, but आपको कॉपी नहीं करना है, क्योंकि सभी गड्ढे में गिरेंगे तो आप ही गड्ढे में गिरोगे. सो मेडिटेशन गिव्स अस अ पावर टू स्टैंड ऑन राइट पाथ. सो ये हम सीखते थे. जानकी दादी बोलती थी लाइट रहना है, राइट करना है, माइट रिसीव करोगे. सो जितना आप राइट करोगे then you will stay light, and the more you stay right you will receive more might from God, mana shakti. The more shakti you receive, the more right you can do, and the more right things will happen to you. So staying strong, and whatever might be the situation, you can't change the situation, but जितना हम यहाँ पे सीखते हैं meditation, you can increase the power of your mind and intellect in such a way that परिस्थिति कितना भी हो you can face it very strongly. लाइक ये बिल्डिंग बहुत बड़ा है, लेकिन व्हेन यू गो ऑन फ्लाइट पे जब आप चढ़ते हो, कितना भी बड़ा बिल्डिंग हो वो छोटा बन जाता है. आप बिल्डिंग की साइज को यू कैन चेंज, सिचुएशन मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन चेंज, बट व्हेन यू फ्लाई मीन्स
when you make your mind, intellect, your thoughts, जैसे कि भाईजी ने बोला, he has given lot of beautiful affirmations. So all the beautiful affirmations, and when you practice meditation, your mind and intellect will become more higher and higher. You start seeing the same things, but with more power. So परिस्थिति छोटी बन जाती है, and you can win over any situation. So thank you. Shanti.